सभापति जी। Sir, on behalf of the entire House, I would like to compliment you on completing 1 year as the Vice President of India and for the astute leadership that you have given to our House, to Parliament. You have brought dignity and grace to the second highest constitutional position in this country and truly helped bring about a lot of improvement, a lot of change with your legal acumen Leader of the House. on the conduct and proceedings No, please. of the House. Thank you. We all feel, Thank you. Thank you. sir, this is something we are all, I speak on behalf of all sides. I'm sure all of us will agree with that. All of us will agree with that. Thank you. Please. Sir, I just want a minute more. Sir, you come from a farmer's family. आपने किसान परिवार से आकर एक धरती पुत्र के नाते जिस प्रकार से अपने ह्यूमिलिटी से, अपने सरल स्वभाव से, व्यक्तित्व से और कार्यशैली से, और साथ ही साथ जो आपका कानून के ऊपर पकड़ है, जिस प्रकार से आपने कानून की समझ को हम सबको भी सिखाया, हम सबको भी आगे समझने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस हाउस की। Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission. जो लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने आप 1 साल कंप्लीट होने के लिए बधाई दी, तो शायद हम सबको अगर कह देते तो सभी मिलके 4 बात कर सकते थे, लेकिन यही तो बहुत मुश्किल है। बगैर बात करे ये सब वन वे करते हैं सभी, तो करने हम भी उसमें शरीक होते हैं और जुड़ते हैं। एक और दूसरी बात आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और जितने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया, और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है, एक हाउस नहीं है, दोनों हाउस है। At least on the last day, at least on the last day, let us listen to the leader of the opposition, please. I can tell you, during 1 year, if I have learnt maximum, I have learnt from the leader of the opposition and the senior leaders. In my chamber, they have been a source of enlightenment. I plead with you, it's a very embarrassing moment for me. As governor also for 3 years, I never came out with any document for 6 months or 1 year or 2 years. I don't comment whether it is advisable or not. I feel humbled and embarrassed, but please listen to the leader of the opposition with full attention. Let us set a good example. Please, no Harinathji, no Harinathji, anyone out of track may be named by me. I may have to name. Leader of the house, I may have to name your member. I may have to name his man. No, I may. Please, we will hear leader of the opposition, irrespective of the situation that what he says may not be generally palatable to all. Please, sir. And I'm sure, sir, you will bear this in mind. It's the last day.
help me that we all part way with a good resolution. नहीं, हम तो आपकी बात, हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, कल करने का आज करो, आज करने का अभी करो, पल में प्रलय होगा फिर करोगे कब? तो हमारी नीति तो यह है सभी जल्दी होना और टाइम पे होना। लेकिन सर, ये प्रजा लोकतंत्र में एक ऐसी बात होती है और डिबेट में छोटे मोटे विषय आते हैं और एक दूसरे के विषय में कुछ कहते हैं, तो अगर वो बहुत अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है बहुत, उस वक्त आप कह सकते हैं ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहां जो हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिमसी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट, अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले, तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, I am pleading with you, Vice President of India and Chairman of this House, because you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना, Thank you, क्योंकि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, कैसा अटेंड करना, और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं, कैसा करना। Thank you, sir. Thank you. Thank you. CBI, CVC सिलेक्शन में वो रहते हैं, वो यानी है to deprive from all these institutions. If Papers to be laid on the you table. suspend him, it is not good. It is not good. Sir, this house unanimously. Shri Muralidhar, V. Muralidharan. Sir, can I have 1 minute before the paper leak? Sir, नहीं सर, ये जरूरी है। I have called papers to be laid on the No, table. that's correct, sir. I agree with You have that. to relate, you have to explain. Sir, see, sir, the convention of this house, I will look into Please it. examine the record and delete this. 1 second. the convention of this house I is that will- the I will conduct look of the into other it. house is not at all discussed in this house. Look here. So Please, the comments made by the leader of the opposition has to be examined and expunged. Okay. And it should be censored Shri also. V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Prahlad Singh Patel ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1A in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chaube. मैं आपकी अनुमति से आज संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 ख पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। Shri Krishnapal. आदरणीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की पुनस्कृत कार्य सूची में क्रम संख्या 1 ग पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करते हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 1F पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected Chairman, sir, I lay the papers shown at serial number G of the revised list of business in the Rajya Sabha for today on the table of the House. श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 1H in the revised list of business for today. Thank you, sir. श्री कैलाश चौधरी।
माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 1I पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री कौशल किशोर। आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1I पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री BL वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 के टॉप पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 1L of today's revised list of business. श्री V मुरलीधरन। Respected Chairman Sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. Bharti Praveen Pawarji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 1M in today's revised list of business. डॉक्टर मुदपुरा महेंद्र भाई। Chairman sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Statement by Minister correcting answer to question, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I lay on the table of the House the statement regarding status of implementation of the observations contained in the 171st report of the department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce on issues affecting the Indian tea industry, especially in Darjeeling region, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Farewell address to retiring members. Honorable members, as you may be aware, one second. After the farewell address, please. One minute. Okay, Mr. 1 second, please. Sir. I give floor to Shri Tiruchi Shiva. Sir, thank you, sir. Sir, just What is the issue, sir? very 3 bullet points, sir. I've got nothing much to elaborate. Sir, on a point of order raised by the leader of opposition in March, you gave a ruling in April, last sessions, that anything can be discussed and any person can be discussed on the floor of the House. I'm fully alive to it. So, sir, when Honorable Muralidharan said about LOP's observation about Adhir Ranjan Chaudhary, as per your ruling, sir, he is allowed. I will give my ruling. Number 2, sir. Okay. Number 2, sir. One second. You have raised a point of order. I'll give my ruling. Thank you. Number 2, sir. Thank you. Sir. Number 2, sir. No. Sir, number 2, sir. Number 2, sir. Yesterday. No. Sir. Very important. Please. Farewell Being to the our last members. day, sir. Yeah, we are. I have reserved my ruling. Sir, I know the importance of No. this. I have reserved my ruling on a point of order with the honorable LOP. Sir, my with second your point. reiterated. Sir, pertaining to You'll what get my. has to be transferred, sir. We shall take it, sir, with emotion, sir. No, what is the next We'll join with them. Number 2, sir. Yesterday, my notice on 167, sir. And you I'll can come read. to that later. Listen, one moment, sir. The next one. 1 moment, sir. You can After read this with it is coming. 168. I gave it in writing because you may find fault with Yes. it. And now, sir, yesterday you No, acceded to please, it. please. But till morning, Thank you. sir, Thank you, morning, sir, we Tiruchi ji. waited all Thank day you, yesterday. thank you. We didn't receive any Thank you. communication from the Honorable government side. members. So we are prepared for a discussion and they are not. Okay. Number 3, sir. One second. Sir, in my experience, 4 terms here, sir. Please. Privilege I motion. understood. Sir, Mr. not Tiruchi members Shiva, have been referred it to is- privilege now it committee is unfair for on minor this part. things, sir, like No, Derek it and is Jairam Ramesh. No, nothing will go on to go. Kindly- Please, nothing will go on to go. Honorable members, no decline. Honorable members, as you may be aware, 9 of our colleagues, please, 9 of our colleagues, they have been our part. Jaram, 9 of our colleagues
from states of Gujarat and West Bengal, namely Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anwadia, Shri Jugal Singh Lokhandwala, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Tola Sen, Shri P. Bhattacharya, Srimati Shanta Chetri, Shri Sukhender Shekhar Rai, and Susri Susmita Dev. They will be retiring on 18th August 2023 on completion of their term of office. 4 of the retiring members, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri Sukhendu Shekhar Rai, have been re-elected. Our congratulations them for being re-elected. With their experience, they will bring on the table a greater commitment and direction. We will have their continued contribution of their experience, talent and intellect, and sagacity in the House. The House will be missing other 5 retiring members who have made rich and significant contributions to the proceedings of the House during the course of their tenure. I am sure they would cherish the unique honor of their association with this House and will continue with their contribution to the nation at large. I will personally urge the retiring members to maintain live contact with members with whom they have spent major part in the House. Srimati Shanta Chetri became a member of Rajya Sabha in 2017 by getting elected unopposed from the state of West Bengal. She also served as a member of West Bengal Legislative Assembly for 3 terms. A postgraduate in commerce from North Bengal University, she is an ardent advocate of women empowerment both inside and outside the House. She has raised the issues affecting the gender divide and development of northeastern region on numerous occasions in the House. Her absence would be felt by us all. Shri Pradeep Bhattacharya, a distinguished personality in Indian politics, became a member of Rajya Sabha in 2011. An educationist by passion and profession, he brought with him vast legislative experience into the House. He has served as a member of Legislative Assembly of West Bengal from 1972 to 77 and that of 11th Lok Sabha from 1996 to 97. The present term is his second term in the Rajya Sabha. He has also served as the chairman of the Committee on Home Affairs. He is actively engaged in various intellectual pursuits outside the House and also inside, including being part of Asiatic Society. Asiatic Society, honorable members, is a mother institution. There is no institution in the country older than that. His wise counsel would surely be missed by all of us, but we are confident he will continue to impart it through the honorable members. Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anawadia has been a member of this August House since February 2021. He has made significant contributions to the deliberations of the House by raising issues of regional and national importance from time to time. He also takes keen interest in Kabaddi, and surely we should keep Kabaddi out of the House. Gardening and Navratri celebrations. He was also the director, Gujarat State Road Transport Corporation. He is a committed and public-spirited citizen. Shri Jugal Singh Lokhandwala was elected to this August House in July 2019. During his tenure, he brought attention on various crucial issues concerning cultural heritage, digitization of manuscripts, a very important aspect, health awareness and promotion of sports in the country. An avid social worker himself, he carried forward the commendable initiatives
initiated by his late father, Sri Mathurji Lokhandwala. He was also the director of Gujarat State Civil Supplies Corporation Limited. He takes keen interest in tennis, badminton, and singing. Susri Susmita Dev, barrister by profession, an alumna of Delhi University, Thames Valley University, London, and King's College, one of the most reputed institutions in the world. Susri Susmita was elected unopposed to the upper house in September 2021. Prior to this, she was a member of the 16th Lok Sabha, 2014 to 19, from Silchar, Assam. She has also been a former member in the Assam Legislative Assembly. Coming from a political background, her father, late Sri Santosh Mohan Dev, had served the country as cabinet minister and Lok Sabha member for 7 terms, including in the 9th Lok Sabha. I make particular reference to 9th Lok Sabha because during which I had the occasion as a member of the 9th Lok Sabha of sharing the floor with him, getting his guidance, and he was a strict disciplinarian. He would always walk up to me and tell me scrupulous adherence to conduct in the house is non-compromising, and as a junior minister, you have to be in obedience of one and all. I was parliamentary affairs junior minister. A renowned, her grandfather, Sri Satyendra Mohan Dev, was a renowned freedom fighter. Honorable members, retirement from Rajya Sabha is just a transitory phase, and I can tell you so. I came to this house about 30 years ago as a minister. I am back. So it is transitory. While it is painful to say goodbye, we must also celebrate the impact these members have had through their effective participation in debates and discussions on the floor of the House. May their journey ahead be as fulfilling and impressive as their time in Parliament. To our retiring members, I thank you for being an integral part of the journey of Bharat's democracy. Your presence will surely be missed, but your impact will forever be felt. I wish you good health, happiness, and fruitful years of service to the nation. Honorable members, in nation building, former members of Parliament indeed have a significant role to play. They constitute experienced think tank, and I'm sure they will continue to be so engaged to serve the nation in that capacity as well. Leader of the opposition. On this point, sir. On retiring members, leader of the opposition. सर, आज जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, तो हमसे तो वो दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, थोड़े दिन के लिए वो हमसे अलग भी रहे तो फिर दूसरे दफा फिर मिलने का चांस रहता है, लेकिन आपको और मेरे को उनसे मिलने का चांस आएगा या नहीं, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमको सोचना चाहिए। तो ये जो मेंबर्स जो यहाँ आते हैं, वो अपने विचार, अपना एक विचारधारा को लेके इस सदन में आते हैं, लेकिन उनको अगर जो भी समय नहीं मिल सकता अपनी बात रखने के लिए, या अपने दिल की बात, या उनके एरिया की बात, या जिस स्टेट से वो आते दिल हैं, की बात हो चाहे मन की बात हो, दोनों कहने का अवसर मिलना तो चाहिए। मन की बात तो मोदी साहब करते नहीं हैं, सर, मन मैं की बात दिल भी की बहुत बात करता महत्वपूर्ण हूँ, है। मैं दिल की बात करता हूँ। तो चलो, मन की बात दिल से, हाँ, ये मीटिंग ग्राउंड है। नहीं, दिल अलग है, मन अलग है। तो सर, कभी तो आप मुझे
पॉइंट स्कोर करने का मौका दें। हाँ, कभी तो आप मुझे पॉइंट स्कोर करने का मौका दें। नहीं आप हमेशा स्कोर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मणिपुर के जैसे इश्यू आते हैं ना, तो वो जरा हमको आपको जरा अलग कर देता है। आप उधर ज्यादा देखते, इधर नहीं देखते, वही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेंबर्स रिटायर होते हैं ये थोड़े समय के लिए, लेकिन अब जाकर फिर सामाजिक कार्य करते हैं और बहुत से पढ़े लिखे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई बैरिस्टर है, कोई अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हैं और वो उनका बहुत से इसमें यंग लोग भी हैं। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो समाज की सेवा करें और जिन विचारधारा पे वो विश्वास रखते हैं उस विचारधारा पे चलने की पूरी कोशिश करें, तभी कुछ लाभ देश को भी होता है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामाजिक कार्य में जो जुटे हुए हैं वो हमेशा उस मार्ग पे चलते रहेंगे और फिर इस सदन में आके अपना ये सदन हो या वो सदन हो, कहीं तो फिर अगर आ गए तो निश्चित रूप से समाज को भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है और उनके वजह से समाज में एक अच्छा वातावरण भी पैदा होता है। इसीलिए मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, अपने नेताओं के तरफ से यही कहूँगा कि ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं ये परमानेंटली रिटायर नहीं हो रहे या ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मुझे कभी कभी अजब लगता है, कोई लोग कहते हैं कि भाई हम रिटायर हो गए, अरे रिटायर होने के लिए आए पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में तो आप इसलिए आते हैं कि अपने उसूलों को, अपने आइडियोलॉजी को सतत उसको जीवित रखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं सुनता हूँ बहुत से नेता लोग, नहीं भाई हम अब रिटायर हो गए। फिर क्या सर्विस करने आए थे? क्या गवर्नमेंट सर्विस थी? ये तो लाइफ लॉन्ग सर्विस है आपकी। तो इसीलिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, आगे अपना काम करके और भी दिखाएंगे और देश को मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये मेरी विनती। लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष महोदय, जुदाई हो विदाई हो उसमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन का भी मौका है। हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कार्यकाल का। अलग अलग मान्य सदस्यों ने, सांसदों ने बहुत सारा योगदान दिया है, कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कई भाषण दिए, कई प्रश्न, ज्वलंत विषय उठाए, अलग अलग रिफ्लेक्शंस देके सदस्य यहाँ से निवृत्त होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां उनकी पार्टी देती है। हमारे यहाँ पे भी लगातार ये एक चर्निंग प्रोसेस रहता है कि व्यक्ति कभी सरकार में आता है, कभी सदन में आता है, कभी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इस प्रकार से व्यक्ति का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ देश की सेवा के अन्य अन्य तरीकों से मौका राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। मैं बधाई देना चाहूंगा सभी मान्य सांसदों को जिन्होंने इतने वर्ष देश की सेवा में सदन में भी योगदान दिया। डॉक्टर जयशंकर का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वैसे तो खुद वापस चुन के आ भी गए हैं, लेकिन इतने छोटे कार्यकाल में जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, 4 साल का, उस 4 साल में माननीय जयशंकर जी ने सिर्फ सदन की गरिमा नहीं बढ़ाई, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत का जिस प्रकार से नाम और सम्मान बना है, जिस प्रकार से भारत की बात को तीव्रता से रखते हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत के विदेश मंत्री की पहचान एक अलग ही प्रकार की बनी है। मैं समझता हूं कि एक संसद में नया व्यक्ति, आई एम कमिंग टू अदर्स,
honorable members, सर अगर और भी लोगों पे चर्चा करने का मौका तो honorable members, on बहुत दुर्भाग्य है कि एक सेलिब्रेशन honorable members, एक सेलिब्रेटिंग somebody's contribution to the second. country पे Mr. इनको Please go. दुख हो रहा है. One second. Honorable members, while the leader of the house has reflected on a particular member, I share your sentiments. Every member in this house who is retiring and who could have retired but is continuing because of re-election, they made significant contributions. And those who get the opportunity of being a minister have a different kind of performance. We are proud, but we are equally proud of the members who did not have the occasion because their party is not in power. So the implication of leader of the house is not a reflection on other members. For example, there are many heated moments. There are many moments where from the chair I reflect differently. But I know the people before me are very, very talented. Take the case of Sushmita Dev. I have highest respect for her. So I wouldn't look at a particular moment. I would see her credentials in King's College, the kind of contribution she has made, the kind of lineage she has for 3 generations. If I look at to Mr. Andy Gupta, 1 second, he has been president of Chartered Accountants Association. His son has been president. If I look at Mr. Pathak, Jairam Ramesh, everyone. So, assuming that I was not going to mention so what the I meant to say, contribution of other members. one I second, mean, it's so sad. One second. Sir, it's so Take your- sad that take they are your- assuming I will not Please, mention please the other take your. members. So all I can say is the leader of the house, and over a period of 1 year, I have interacted with him. As a matter of fact, the leader of the house can suffer an allegation that he is more in connect with the members of parliament this side. Yes. So please go ahead. And conclude. Please conclude. So, yeah, so Dr. Jaishankar has truly made the country proud across the world, particularly in very trying circumstances during the Ukraine crisis, the way he brought back our students, which all of us as members have witnessed. Derek has been an old friend. We came into parliament around the same time, if I remember correctly, or a year or two apart. And over the years, we worked together, both in opposition, we worked in different parties, but with a lot of floor coordination as opposition members. And despite some of his very different views, I think the national spirit that all the retiring members have reflected on different points of time, the nation first philosophy, which I think all the members of this house will agree with me is important, has been the overarching framework in which members of parliament have worked. सुष्मिता बहन ने लोकसभा में भी काम किया, यहाँ भी काम किया. डॉक्टर रॉय आपके आसन पे भी जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया पूरे सेशन की प्रोसीडिंग्स को, हमारे गुजरात के 2 एमपीज, हमारे पश्चिम बंगाल के बाकी माननीय सदस्य, हर एक ने राजनीतिक जीवन में भी अपना प्रभाव रखा है, सामाजिक जीवन में भी बड़ा योगदान रहा है. बहन डोला सेन और मेरा व्यक्तिगत संबंध इसलिए भी है कि वो टेक्सटाइल्स कमेटी में भी मुझे बहुत अच्छे सुझाव देती है और चेंबर में अंदर आने से भी रोकती है. तो हर प्रकार के अनुभव, हर प्रकार के विषय हाउस में होते हैं, लेकिन मित्रता कभी खराब नहीं होनी चाहिए, संबंध कभी बिगड़ने चाहिए. मतभेद हो सकता है, पर मैं समझता हूँ किसी के भी साथ इस सदन में किसी का भी मनभेद नहीं हुआ है, और यही इस सदन की और पार्लियामेंट की गरिमा का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बड़ी उपलब्धि है. सभी को मेरी शुभकामनाएं जो भी रिटायर हो. Honorable members, I'll 1 second. One second. One second. Please take your seat. I have taken note of it. I'll indicate who has to speak. 1 second. No, I'll miss a point. Let me. Honorable members, I recollect one particular instance. Ms. Dolasen, I recollect a particular moment
as Governor West Bengal, I got a request that a delegation of members of parliament, including Ms. Dola Sen, want audience with me. I immediately granted audience. Now we had very frank discussion. And when things get very frank, the vocal cords get more active. So my security outside was equally worried what is happening inside. And my ADC came to the room, sir, is everything all right? But that scene in the Raj Bhavan is a minor incident. This one I have seen. But contributions have been immense intellectually. And point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर सर आपने मेरा परमिट किया था Neeraj ji, I saw Pramod Tiwari before. He caught the eyes of the chairman before anyone else could. सर मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि सदन परंपराओं से चलता है नियमावली में जो जिसको हम कार्रवाई करते हैं सर ये परंपरा रही है पुरानी कई बार परंपरा रही कई पुरानी कि जब कभी सम्मानित सदस्यों की विदाई होती है तो आपने बड़े अच्छे शब्द बोले बड़ा चुन चुन के बोले सर परंतु ये परंपरा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदाई के समय सदस्यों के मौजूद रहते हैं ये कई बार की परंपरा है पुराने सभी सदस्यों तो आज तो उनको बुला लीजिए आज तो बुला लीजिए इस तरह राज्यसभा का अपमान न करें So, honorable members, I get the. Oh, okay. Okay. सभापति One महोदय second. Shri Kirodi Lal Meena. सभापति महोदय What is your point of order, sir? पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से डिसऑर्डर हो रहा है और point of order is declined. Nothing will go on record. No. Direct, don't do it. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I will allow leaders of other parties to say on retiring members. Shri Tiruchi Shiva, please. Take it. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Take Mr. Piyush Goyal. Mr. Goyal, see there. Mr. Tiruchi Shiva. Only Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. on retiring Mr. Tiruchi Shiva. Only on retiring members. Only on retiring members. Our sentiments we are required to express, and trust me, honorable members, when you express sentiments for members who are retiring, you are addressing a very large segment of retired members. Tiruchi Shiva, please. Tiruchi, I'll come to you. Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Please listen to Tiruchi Shiva. Sir. बोलिए Tiruchi, go ahead. For retiring members, sir, with the retiring members. I'll go to it. But Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. बोलिए Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Tiruchi Shiva, please address the chair. If you want to address, I call the next speaker. Sir, now I address the chair. Mr. Tiruchi Shiva. One second. One second. The House is adjourned to meet at 12 noon today. अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 1L
of today's revised list of business. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. Bharti Praveen Pawarji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 1M in today's revised list of business. Dr. Mudpura Mahendra Bhai. Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Statement by Minister correcting answer to question, Shri Narendra Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, मैं आज के लिए संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। Statement by Minister Srimati Anupriya Singh Patel. Chairman, sir, with your kind permission, I lay on the table of the House the statement regarding status of implementation of the observations contained in the 171st report of the department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce on issues affecting the Indian tea industry, especially in Darjeeling region, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Farewell address to retiring members. Honorable members, as you may be aware, one second. After the farewell address, please. Okay, Mr. 1 second, please. Sir. I give floor to Shri Tiruchi Shiva. Sir, thank you, sir. Sir, just What is the issue, sir? very 3 bullet points, sir. I've got nothing much to elaborate. Sir, on a point of order raised by the leader of opposition in March, you gave a ruling in April, last sessions, that anything can be discussed and any person can be discussed on the floor of the House. I'm fully alive to it. So, sir, when Honorable Muralidharan said about LOP's observation about Adhir Ranjan Chaudhary, as per your ruling, sir, he is allowed. I will give my ruling. Number 2, sir. Okay. Number 2, sir. One second. You have raised a point of order. I'll give my ruling. Thank you. Yes. Number 2, sir. Thank you. Sir. Number 2. Sir. No. Sir, number 2, sir. Number 2, sir. Yesterday. No. Sir. Very important. Please. Farewell Being to the all last members. day, sir. Yeah, we are. I have reserved my ruling. Sir, I know the importance of this. I have reserved my ruling on a point of order with the Honorable LOP. Sir, my which second you have point. reiterated. Sir, pertaining to You'll what get mine. has to be transferred, sir. We shall take it, sir, with emotion, sir. No, what is the next? We'll join with them. Number 2, sir. Yesterday, my notice on 167, sir. And I'll come to that later. Listen, one moment, sir. The next one. 1 moment, sir. You can After read this, with it is coming. 168. I gave it in writing because you may find fault with Yes. it. And now, sir, yesterday you No, acceded to please. it. But till morning, Thank you. sir, Thank you, sir, we Tiruchi. waited all Thank day you, yesterday. thank you. We didn't receive any Thank you. communication from the Honorable government side. members. So we are prepared for a discussion and they are not. Okay. Number 3, sir. One second. Sir, in my experience, 4 terms here, sir. Please. Privilege I motion. understood. Sir, Mr. not Tiruchi members Shiva, have been referred it to is- privilege now it committee is unfair for on my minor part. things, sir, like No, Derek it and is Jairam Ramesh. No, nothing will go on. Kindly- Please, nothing will go on. Honorable members, no decline. Honorable members, as you may be aware, 9 of our colleagues, please, 9 of our colleagues, they have been our part. Jaram, 9 of our colleagues from states of Gujarat and West Bengal, namely Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anwadia, Shri Jugal Singh Lokhandwala, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri P. Bhattacharya, Srimati Shanta Chetri, Shri Sukhendra Shekhar Rai, and Susri Susmita Dev. They will be retiring on 18th August 2023 on completion of their term of office. 4 of the retiring members, Shri S. Jaishankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri Sukhendu Shekhar Rai have been re-elected. Our congratulations them for being re-elected. With their experience, they will bring on the table
a greater commitment and direction. We will have their continued contribution of their experience, talent and intellect, and sagacity in the House. The House will be missing other 5 retiring members who have made rich and significant contributions to the proceedings of the House during the course of their tenure. I am sure they would cherish the unique honor of their association with this House and will continue with their contribution to the nation at large. I will personally urge the retiring members to maintain live contact with members with whom they have spent major part in the House. Srimati Shanta Chetri became a member of Rajya Sabha in 2017 by getting elected unopposed from the state of West Bengal. She also served as a member of West Bengal Legislative Assembly for 3 terms. A postgraduate in commerce from North Bengal University, she is an ardent advocate of women empowerment both inside and outside the House. She has raised the issues affecting the gender divide and development of northeastern region on numerous occasions in the House. Her absence would be felt by us all. Shri Pradeep Bhattacharya, a distinguished personality in Indian politics, became a member of Rajya Sabha in 2011. An educationist by passion and profession, he brought with him vast legislative experience into the House. He has served as a member of Legislative Assembly of West Bengal from 1972 to 77 and that of 11th Lok Sabha from 1996 to 97. The present term is his second term in the Rajya Sabha. He has also served as the chairman of the Committee on Home Affairs. He is actively engaged in various intellectual pursuits outside the House and also inside, including being part of Asiatic Society. Asiatic Society, honorable members, is a mother institution. There is no institution in the country older than that. His wise counsel would surely be missed by all of us, but we are confident he will continue to impart it through the honorable members. Sri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anawadia has been a member of this August House since February 2021. He has made significant contributions to the deliberations of the House by raising issues of regional and national importance from time to time. He also takes keen interest in Kabaddi, and surely we should keep Kabaddi out of the House. Gardening and Navratri celebrations. He was also the director, Gujarat State Road Transport Corporation. He is a committed and public-spirited citizen. Sri Jugal Singh Lokhandwala was elected to this August House in July 2019. During his tenure, he brought attention on various crucial issues concerning cultural heritage, digitization of manuscripts, a very important aspect, health awareness and promotion of sports in the country. An avid social worker himself, he carried forward the commendable initiatives initiated by his late father, Sri Mathurji Lokhandwala. He was also the director of Gujarat State Civil Supplies Corporation Limited. He takes keen interest in tennis, badminton, and singing. Susri Susmita Dev, barrister by profession, an alumna of Delhi University, Thames Valley University, London, and King's College, one of the most reputed institutions in the world. Susri Susmita was elected unopposed to the upper house in September 2021. Prior to this, she was a member of the 16th Lok Sabha, 2014 to 19, from Silchar, Assam. She has also been a former member in the Assam Legislative Assembly. Coming from a political background, her father, late Sri Santosh Mohan Dev, had served the country as cabinet minister
and Lok Sabha member for 7 terms, including in the 9th Lok Sabha. I make particular reference to 9th Lok Sabha because during which I had the occasion as a member of the 9th Lok Sabha of sharing the floor with him, getting his guidance, and he was a strict disciplinarian. He would always walk up to me and tell me scrupulous adherence to conduct in the house is non-compromising, and as a junior minister, you have to be in obedience of one and all. I was parliamentary affairs junior minister. A renowned, her grandfather, Sri Satyendra Mohan Dev, was a renowned freedom fighter. Honorable members, retirement from Rajya Sabha is just a transitory phase, and I can tell you so. I came to this house about 30 years ago as a minister. I am back. So it is transitory. While it is painful to say goodbye, we must also celebrate the impact these members have had through their effective participation in debates and discussions on the floor of the House. May their journey ahead be as fulfilling and impressive as their time in Parliament. To our retiring members, I thank you for being an integral part of the journey of Bharat's democracy. Your presence will surely be missed, but your impact will forever be felt. I wish you good health, happiness, and fruitful years of service to the nation. Honorable members, in nation building, former members of parliament indeed have a significant role to play. They constitute experienced think tank, and I'm sure they will continue to be so engaged to serve the nation in that capacity as well. Leader of the opposition. On this point, sir. On retiring members, leader of the opposition. सर, आज जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, तो हमसे तो वो दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, थोड़े दिन के लिए वो हमसे अलग भी रहे तो फिर दूसरे दफा फिर मिलने का चांस रहता है, लेकिन आपको और मेरे को उनसे मिलने का चांस आएगा या नहीं, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमको सोचना चाहिए। तो ये जो मेंबर्स जो यहाँ आते हैं, वो अपने विचार, अपना एक विचारधारा को लेके इस सदन में आते हैं, लेकिन उनको अगर जो भी समय नहीं मिल सकता अपनी बात रखने के लिए, या अपने दिल की बात, या उनके एरिया की बात, या जिस स्टेट से वो आते दिल हैं, की बात हो चाहे मन की बात हो, दोनों कहने का अवसर मिलना तो चाहिए। मन की बात तो मोदी साहब करते नहीं, हैं, मन मैं की बात दिल भी की बहुत बात करता महत्वपूर्ण हूँ, है। मैं दिल की बात करता हूँ।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, I will give opportunity to the floor leaders to reflect on the retiring members and then give some time to the retiring members to express their sentiments and then take the business of the house. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir, parting is always painful, sir. We don't want some things to happen, but it happens because of some circumstances. Farewell is one such occasion. Sir, out of the members who are retiring today, my dear friends Derek O'Brien, Sukendra Shekhar Rai, and Dolasan, and Honorable Minister Jai Shankar will return to the house will work with us, sir. And I hope Sushmita Dev, whom we have appreciated very much, of course, she deserves that. And I'm very happy to say that our father, Santosh Mohan Dev, when he was Parliamentary Affairs Minister, I was in the Lok Sabha and had a very great time working with him. And she reflects his characters in many ways. The way she articulates, the depth of her speech, and of course the other things which we need as opposition, everything she qualifies. So she will return to the Lok Sabha. So also Shanta, who has had a remarkable track record. She's very cool and silent, but she makes very important and appreciable deliberations in the House. And so also Bhattacharya, whom we cannot forget, who has been a chairman on parliamentary standing committees, who was also silencer. And sometimes he will be a real Bengali here when he expresses his inner mood, whichever that is created at the moment of time. So also Mr. Jagal Singh from the other side is retiring. We all bid a farewell, sir, but not as you said and leader of opposition said, it is not permanent. Sir, I should say only one thing, sir. This house is a real reflection of unity in diversity. Whether it is that party or this party, we are all together. We are from various states, speaking various languages, from having various cultures, sir. But we are all one here. Our difference because of the ideologies may reflect on the floor of the house, but the moment when we go out, we come together. So the integrity of the nation, that too in the Council of States and Parliament, no other forum is a very good example of integrity, sir. And sir, we are very proud that to be a member of this house, and we should appreciate them that they had the privilege of being one among the 800 persons in the 140 crore people of this country who have contributed, sir. I express on behalf of the DMK party my heartiest wishes. Thank you. Shri Andy Gupta. धन्यवाद चेयरमैन साहब। आज हमारे बीच से हमारे साथी कुछ रिटायर हो गए हैं। ये रिटायर्ड तो हो रहे लेकिन रिटायर्ड नहीं है सारी, जो सेवा भाव से आए हाउस में वो कंटिन्यू रखेंगे किसी न किसी रूप में। और मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की ओर से इनके भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस लगन से यहाँ हाउस में इनका योगदान रहा है वो हालांकि भूला नहीं जाएगा। सदन आभारी उस चीज़ के लिए और उसको आने वाले समय में ये उसी लगन से काम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इनकी फिर मंगल कामना करता हूँ, इनके शुभ भविष्य के लिए। डॉक्टर केशव। I share the sentiments of all my colleagues in extending farewell or at the same time wishing them a better life ahead. But I hope we have learned much from the members and they will have a greater time, much more time to spend in the service of the people, and I wish them all best. Derek O'Brien is a connecting factor. He is retiring also, and would continue to be the leader of the party. Sir, to those members who are retiring, I don't want to give a long speech. I wish them well, all the members who are retiring, and I must apologize to them
from the Rajya Sabha that in their last 23 days in Rajya Sabha, while they were serving, they didn't have the privilege. We'd have all been very happy if our honorable, much respected Prime Minister had spent a little time here. That would have been a beautiful farewell gift. Thank you. Dr. Sasmit Patra. ठीक है. Honorable Chairman, sir, Dr. on behalf of my party, the Biju Janata Dal, we extend our warm felicitations and our best wishes to all the honorable members who are retiring. Sir, I'll just request you to indulge me just for 2 minutes. I'd like to specifically, on one sentence each. Mani Shri Anavadia ji, I was always touched by his simplicity and his warm smile and his contribution in the house whenever he stood up. He was very well-meaning, sir. Shri Pradeep Bhattacharya ji, because I know a bit of Bengali, I had the privilege of sharing a bit of Bengali and perfecting it with Bhattacharya Sahab, and Dada was always very forthcoming in terms of his contributions. Shri Jagun Singh Lokhandwala ji, we became friends on the very first day that he came to the house, and he's like Lokhandwala, strong and steel, and that is how his contributions have been in the house, truly remarkable. And very well dressed. Always very well dressed. Always very strong. And Shanta Chetri ji, as a sister, her presence in the house has always enlightened us, and especially from the northeastern and especially the Darjeeling and all the areas and issues that she raised were very meaningful. We have Ms. Sushmita Dev ji, and she was tremendously. No, Aj Dev. So, in fact, I'm so glad it doesn't go further. It ends here. No, but she has been like a true friend, and many a times we've had conversations, and she understands various aspects that we have shared together. It stays between both of us, but I'm sure her presence helped us, and her absence will surely do it. For all the 4 members whom we are privileged to have back with us, Dr. Jaishankar, Derek Da, Dola ji, and Shukhendu Da, it's going to be a truly a remarkable journey with them in the next few years that we have worked together. Thank you. राजीव शुक्ला. धन्यवाद चेयरमैन सर. देखिए, ये सदन तो ऐसा है कि इसमें एक न एक दिन सबको रिटायर होना है. इन दीवारों में, इन छतों के नीचे कितने आए कितने चले गए, एक से एक बड़े लोग, एक से एक छोटे लोग, तो इसका कोई अभिमान नहीं है. लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो लोग हमसे रिटायर यहाँ से हो रहे हैं, उनकी भावनाएं भी सुन ली जाए, क्योंकि जो उनमें बोलना चाहे, एंड दोज who are actually retiring, ये नहीं कि वापस लौट के आ गए, वो मुश्किल से 3-4 है, जैसे प्रदीप दा है, ये बोलना चाह रहे हैं, इनको भी मौका दो. फ्लोर लीडर्स तो बोलते रहते हैं, तो उनको भी मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा है. उनकी भावनाएं भी सुन ली जाए तो बहुत अच्छा है. सभापति महोदय, आज 9 माननीय सदस्य लोग रिटायर हो रहे हैं. सार्वजनिक जीवन में वो स्वेच्छा से आए हैं और पार्टी के बंधन से जब उनका टर्न पूरा हुआ है तो जा रहे हैं. हम अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से नहीं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इन्हें विदाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो. जय हिंद. श्रीमती पीटी उषा. Sir, my best wishes to all the honorable MPs, those who are going to retire today. Thank you. Dr. V. Sivadasan. Contribution of the members. The contribution of these members, the retiring members, are very great contributions. As immense contributions they have made for the improvement of our parliamentary activities. Susmita Dev and others are actively participating in the parliamentary procedure, and also they have raised the issues of the common people in this house. We all support them for in future also. I believe they will raise the issues of the common people not only here
wherever they are getting the space. So I salute them. Wholeheartedly I wish Susmita and others for active participation for the democratic process of the country. Thank you, sir. Thank you. Honorable members, now I have the privilege and honor to call upon those who are retiring from this house to share their experience and sentiments with us. Shri Dinesh Chandra Jamal Bhai Anawadia. On this occasion, let me tell you, take your seat, take your seat. जयराम जी, नजाकत समझिए, रिटायरिंग मेंबर्स की बात सुन रहे हैं। मैंने खुद कहा है कि मेरा ऑनर और प्रिविलेज है। बैठिए बैठिए बैठिए। यस प्लीज बोलिए। मुझे समझ में नहीं आता आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है लीडर ऑफ द हाउस से कि आपने बात की और वो आगे। अब आप हमारे माध्यम से क्यों करते हो? सीधी कर लिया करो। क्योंकि इन्हीं के मित्र पक्ष के सीनियर लीडर ने मेरे को बाहर पकड़ लिया ये समझाने के लिए। नहीं पकड़ लिया, नहीं क्लैरिफाई कीजिए। पकड़ लिया मतलब मुझे कहा कि भाई हम भी आपके फिजिकली तो नहीं पकड़ाने, फिजिकली तो नहीं पकड़ाने। ऑनरेबल मेंबर्स नाउ यस मिस्टर अनावाडिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज हमारा लास्ट डे है पार्लियामेंट में। मुझे यहाँ पार्लियामेंट में भेजने के लिए हमारी पार्टी के और इस देश के समग्र विश्व के नेता और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़े सदन में लाने का मौका दिया है। मैं गुजरात से आता हूँ, मैं कुम्हार प्रजापति समाज से आता हूँ। गुजरात कुम्हार प्रजापति समाज से 75 साल में पहली बार प्रजापति समाज कुम्हार समाज को राज्यसभा में लाने का मौका सम्माननीय मोदी साहब ने दिया है। मैं उनका दोबारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मेरा समाज मिट्टी से जुड़ा हुआ समाज है और मैं किसान पुत्र हूं और ऐसे कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता था। भारतीय जनता पार्टी का 1981 से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते संगठन में काम करता था और सीधा मुझे इतने बड़े सदन में बिठाने का मौका उन्होंने दिया है। तो मैं मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से और पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के मेरे प्रजापति कुम्हार समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और आदरणीय अमित भाई शाह साहब और आदरणीय नड्डा साहब का और हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं। मैं सर एक मिनट मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे सदन के माननीय सभापति जी आदरणीय धनखड़ साहब का कि उनका भी मार्गदर्शन हमको मिला है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय हमारे लीडर ऑफ हाउस का आदरणीय श्री पीयूष जी गोयल सर का और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे सभी माननीय सदस्यगण, सभी पार्टियों के लीडर्स, सबके पास से मुझे बहुत सारा सीखने को मिला है। ये सदन में आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिला है और जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो मेरे व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से, तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं और मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP सर का भी बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने भी, उनके पास से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। ऐसे इस सदन के सभी पार्टियों के सभी सदस्यों को मैं आभार मानता हूं कि आप सबके पास से मुझे बहुत सीखने को मिला है। आभार अस्तु। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। श्री प्रदीप भट्टाचार्य।
Thank you, sir. Sir, I am very happy that you have given me the opportunity to spell To out. retire. I have not given the opportunity to retire. No, you have not given me the chance. You On a have lighter given me the note. chance to say a few words. But as you recall, when I met you at your chamber, I told you very frankly, sir, I don't believe this type of drama. So kindly don't allow me to say. But in spite of that, you are so kind enough. You have again tell me to speak something. So I would like to say, first of all, my good wishes to all my colleagues, those who are in this side and that side, and I am sure of it, they will be able to run this house properly and smoothly so that the people of the country will understand Rajya Sabha is alive and they are doing something good. Sir, with my long experience in politics, at least for 50 years, I had the opportunity to work with Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee ji, Narasimha Rao ji. Now I am functioning with our leader of the opposition, Kharge ji, and so many colleagues from this side and that side. Whenever I met some of our honorable ministers, they have listened to me and they have tried their level best to help me so that I can serve to the people of the country. Then lastly, I feel I had the impression that at least this August House will come out with a resolution in regard to the Manipur issue. But unfortunately, it did not happen. But just for a moment, just for a moment, just for a moment, just for a moment. I said I was a teacher of a college for last 29, 30 years. So my two students are working at Manipur. They are the government of India service. Sir, just a minute. They rang me a few days back and told me why Rajya Sabha is not coming out of saying something about the Manipur. Point noted, Sir, sir. it Point is noted. their feeling, heart feeling. So I would like to impress this house. This is the position. Lastly, again, if I do something wrong, kindly excuse me. Thank and you. I wish Thank you. everybody should be Shri good health and good Jugal luck. Sen, Lokhandwala. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में माननीय अमित शाह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय जेपी नड्डा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी, हमारे सदन के नेता एवं गुजरात के हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे संगठन के CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष श्री, इन सब का आभार व्यक्त के साथ बहुत हमारे यहाँ के नेता माननीय पीयूष गोयल जी और सभी सदन के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे सामने में बात करता हूं सर, मैं करता हूं सर, मैं सामने बैठे हमारे ऑपोजिशन लीडर माननीय खड़गे जी और माननीय उप सभापति हरिवंश राय जी और ब्यूरोक्रेट्स और मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने आशीर्वाद दिया है, तब मैं यहां तक पहुंचा हूं। मुन्ना भाई, आज ये 4 साल और 1 महीना मेरे कार्यकाल का हुआ, उसके अंदर 2 से 1.5 साल कोविड की महामारी के अंदर हम सब लोगों ने वो फेस किया। उसके अंदर जब पहले 2-3 चीज के अंदर उसके अंदर मेरी साइन रही 370 और 35A की, जो राष्ट्र को जोड़ने की, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग था, उसको जोड़ने के अंदर मेरी साइन रही। 3 तलाक, CAA और ऐसे कई कानून बनाने के अंदर मेरा सहयोग रहा। मैं मानता हूं कि शायद ही मैं ऐसा खुशनसीब हूं कि ये संकल्प जो था
हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्होंने जो लिया था वो संकल्प के अंदर हमारा साइन था। मैं 2-3 बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा सर। इसके साथ यहाँ बैठे काफी सारे मित्र भी हमें बहुत अच्छी सेंट्रल हॉल की कमी रहेगी। जब मैं गुजरात रहूंगा तब सब लोगों को मिस करूंगा। सबको सामने वाले सदन से भी मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे और पर सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई बात रहती थी तो सेंट्रल हॉल के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे, और वो वार्तालाप मुझे आने वाले वक्त में काम आने वाला है, ऐसा मनोज जी कह रहे थे। और इसके साथ जॉन जी, हम लोग कमेटी के मेंबर, डॉक्टर जॉन, बहुत सारे कमेटी के मेंबर, you must जॉन stop जी, the habit of जॉन जी interrupting. आपका You सहयोग do it चाहिए every मुझे। time. I caution you, don't do it. और There is a procedure to follow. जिस Please, तरह go ahead. हर एक बात में हमारा, मैं तो चाहूंगा कि हम हर एक बात में पॉलिटिकली ना निकाले, क्योंकि आने वाले सदन के अंदर शायद आप हमारे पास रहने वाले हैं, ये ऐसा मुझे 100% विश्वास है। Thank you. और सर एक ही बात, आज विश्व जानता है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको 1.5 घंटे तक यहाँ वो स्पीच दे रहे थे, तो सामने भी वो बोलने नहीं देते थे। ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ हर एक का विचार होना चाहिए और कहना चाहिए, जिसको जो चाहे जो कह सकता है। आप लोगों से श्रीमती शांता छेत्री। सर मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, वेंकैया नायडू जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ आए तब बोलने का मौका दिया था। यहाँ के जो जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमसे हंस मिल के, यहाँ पे जितने भी मार्शल है वो हंस के हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ये शायद ही हमें, मैं गुजरात रहूंगा तब मिस करूंगा और आपको भी मिस करूंगा सर, जब भी आप मिलते हैं हंस के मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्रीमती शांता छेत्री। Thank you, sir. We'll miss you. Sir, Your आज presence has been impactful. Okay, sir. Your absence will be felt. Yes, sir. Thank you. Go ahead. Thank you, sir. सर आज 11 अगस्त स्वतंत्र संग्रामी खुदीराम बसु का डेथ एनिवर्सरी, आज का दिन बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनके प्रति मेरा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना फेयरवेल भाषण देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। Sir, on 18th of August, my term as Rajya Sabha MP will come to an end. I am eternally thankful to our Supreme Leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me this opportunity. It is due to her trust in me today. I can proudly say that my body of work is in Parliament records for eternity. This opportunity has fulfilled my greatest dreams. I am a contented person, now happy with a life spent well. What more can one ask for than contentment and joy, which my heart is filled with? Thank you, Mamta Didi. Sir, I take this opportunity to thank our Honorable Chairman and member of the House for all the support and exchange of knowledge. In these 6 years, I have worked tirelessly to represent the Gorkha people of Darjeeling Hills and as well as the state of West Bengal. I did not waste a single opportunity to take up matters concerning our Darjeeling Hills as well as my state, West Bengal. I have spoken for the 11 communities' tribal status, inclusion of Lepcha language in the 8th schedule, spoke about tea workers, roads, national highways, problems during monsoon, the Karshang TV tower, not to relocate army hospital matters, concerning Himalayan railways, etc., etc. The list goes. More than 400 questions have been admitted in the parliament. Sir, I introduced all the 11 private member bills related to my state of West Bengal as well as Darjeeling Hills. I have spoken on the third gender bill and presented my valued opinion and suggestion, which was satisfying
as this gender deserves lot more. Sir, I have spoken innumerable special mentions and 0 hours attended regularly all the committee meetings and tours. My 6 years was spent complete hard work and learning. Sir, as I move on from this role, I am grateful for trust you have placed in me and for the invaluable lessons I have learned from my fellow parliamentarians. I would also like to thank my TMC members who have been my strength and support all along this fantastic journey. As I bid farewell to the Rajya Sabha, I carry with me a sense of accomplishment, a deep appreciation for the democratic process, and a commitment to the continue contributing to the betterment of society. I will cherish the memories made here and the lessons learned, and I will forever hold in my heart the privilege of having served alongside some of the brightest minds and most dedicated individuals in our nation. Thank you, honorable members and all the employees of the Rajya Sabha for this incredible journey and for the opportunities and for the unwavering support. May this house continue to be a beacon of democracy and a forum where the collective wisdom of diverse voices shapes the destiny of India. Finally, I wish that as the sun rises over the majestic Tiger Hills and turns it into gold, I pray that our India Party rise with the same glow on May 2024 to bring forth a beginning of a golden era for India. Jai Hind, Jai Bangla, Jai Gorkha. Thank you, sir. Sushri Sushmita Dev. Thank you, sir, for the opportunity. Today is Martyrs' Day, so I would like to start by paying my deep tribute to Khudiram Boshu. Sir, incidentally, on a lighter note, my division number is 144, which is a partial curfew, as you know. So I have waited for my opportunity for very long to speak. And you took it so literally. You know, 144 is मेरा division number ही 144 है, क्या करे sir? Anyway, I am extremely grateful, sir, for your kind words and every leader of the floor from various parties who have spoken. I come from Northeast, sir, from the state of Assam, and I think कुछ ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि Northeast के किसी प्रदेश से किसी हाउस में कोई आए किसी बाहर के प्रदेश से. As you know, my late father won 2 elections from Tripura, and Kalita ji will be able to say that Professor Bibi Datta was once nominated. I think I am the third such member who comes from a state in Northeast, but I'm honored that my leader Mamata Banerjee gave me a seat in Rajya Sabha coming from Northeast, from the state of Bengal. Sir, when I won in the 16th Lok Sabha, very often I used to come to these galleries in Rajya Sabha to watch what the upper house is saying. I used to watch very keenly what Mr. Jaitley is saying and how Mr. Chidambaram is debating on GST. I watched Derek O'Brien, Shukhendu Da, Professor Yadav, and I used to truly feel that what a privilege it is to be in this house. And contrary to popular belief, I never expected I'll come to the upper house. लोग कहते हैं कि इनको तो पता था ये राज्यसभा में आएंगे, मुझे पता नहीं था. I was the first one to congratulate you. Right, sir. I was the governor then. As the governor of Bengal, you called me and congratulated me. हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, but I would also like to mention that an integral part of this house is not just the members, but it's the marshals, it's the staff who sits here, and however the Secretary General who guides us through many moments, I would like to thank them also. Sir, coming from Northeast, I'm not going to make a political speech at all, but I will say one thing.
keeping the states of Northeast stitched together is a Herculean task, sir. Is it not political? It's a Herculean Whenever task. someone says I am not going to make a political Means speech, I will not I am sure criticize. it will be Sir, I will 100% not political. criticize anybody today. I will not criticize anybody today, but I feel that the way the peace in Northeast has been stitched together, it's a very delicate process. It's a very delicate process because different aspirations, so I will not use the word conflict, today is not that day, but different aspirations of different ethnic groups, different linguistic groups. I myself am a linguistic minority from Assam. It's a very fine balance. It's a very fine balance that we should all strive to maintain even in the future. That's all I ask. That's all I ask. और एक बात सर मैं कहना चाहती हूँ 16th लोकसभा में एक और खासियत थी. After many decades, a government came to power with absolute majority. After many decades. And in that, I think, was a golden opportunity to do policy reforms and do many good things for the country. So beyond that, whether that has been done or not done, I am no one to comment. But I hope that the effects of this majority will be judged by the people. So I hate goodbyes. I hate goodbyes. I'm very bad at saying goodbye. So I'll tell all my colleagues on my right and on my left that I'm sure that we will meet again, whether it's inside the house or outside the house. And I would like to thank my leader, Derek O'Brien, Shukhendu Da, even Kharge ji, LOP. He guided me in the 16th Lok Sabha. He's today here in the Rajya Sabha. I would like to thank Leader of the House, Piyush Goyal ji. And I will end my speech with one story. Sir, in Lok Sabha, once a very complicated and technical bill came. It was about payment gateways, on credit card. And Jaitley ji was the finance minister there. So अचानक खड़गे जी ने बोला सुष्मिता, this is coming up, you have to speak on it because the person who was supposed to speak on it is not here today. And I just could not decipher that bill. I was struggling with it. I remember going to Digvijay Singh ji and asking. I went to Arun Jaitley ji to say, sir, you're moving this bill. I'm not being able to follow. In the next 10 minutes, I have to speak. So he told me how to debate that bill against the government. So, sir, however we may fight, how much ever we may fight, I feel those backroom channels that no, I'm just saying, so that is the beauty of parliament, of democracy, that I hope to see in the future in this house and the other house. Thank you very much, sir, and I hope to see you soon again. When the honorable member Sushmita was saying people on my right and left, I was wondering people who are on your right are on my left. So we'll have to reconcile. Honorable members, the sentiments expressed by the retiring members and by leaders of the various political parties indicate that our bond will continue to flourish. And everyone living this house will be an integral part of this house. I had indicated on an earlier occasion that as Chairman Rajya Sabha, we will look after whenever they visit Delhi to make arrangement for their stay. And we have devised a mechanism that honorable members in this house need not get in touch with the secretariat. They need to get in touch with the secretary to Rajya Sabha, a very senior official, so that the members have least inconvenience. As regards certain issues of retiring members, like pension issues, all are settled before their last day of retirement. And this enlightenment I got on a situation that on 8th August 2022, after my election had been declared, but I had not taken oath,
a former member of Rajya Sabha, thought it fit to write to me as Vice President. Venkaiah Naiduji was Vice President then, and said his pension issues are pending with Rajya Sabha Secretariat on one ground. And that ground is that Rajya Sabha Secretariat was insisting for an affidavit that must be sanctified by a gazetted officer. After taking oath of office on 11th August, after 1 hour at Uprashtrapati Niwas, I came to Rajya Sabha. And I asked the Secretary General, why are we delaying it? The honorable member retired in April. We know his bank account. We know his details. And I was surprised. Rajya Sabha Secretariat said, there is an act. That act has been passed by Parliament. That act is in pursuance to the recommendation of a joint parliamentary committee. And that act makes a provision that such a form should be there. I said the honorable member has already indicated he will go to court of law. With your strength, I directed the Secretary General then and there that all these provisions are not mandatory. They are directory. And I ensured on the same day the proceedings at Rajya Sabha Cabinet Secretariat on that count. But sometimes when we engage into legislation, we create a mechanism that puts the executing authorities into problem. And that indicates that everything which is passed by this House as a legislation must be fully scrutinized. We in this House, the Joint Parliamentary Committee, they sanctified that a retiring member will have to give an affidavit duly signed by a gazetted officer. Secretariat was bound by it. I have held it to be directive. But if we had been more alert at that point of time, cared for the dignity of a retiring member, perhaps that situation would not have arisen. I have made it a condition here that before the member retires, everything must be formalized. And whenever an ex-member comes to Delhi, he has any problem of accommodation in Western Court, we will try to accommodate as much as possible. Honorable members, I now take the question hour. It was always there. As a special circumstance, question hour at yes, Mr. Meena. राजस्थान की हालात बहुत बिगड़ी हुई हैं सभापति महोदय। Question number 241, Shri Harnath Singh Yadav. Shri Harnath Singh Yadav, question 241. प्रश्न संख्या 241। Honorable Minister. Question 242, Shri Vaiko. Not asked. Honorable Minister. Question number 243, Shri Harbhajan Singh. Honorable Minister. Question number 244, Shri Kapil Sibal. Honorable Minister. सभापति महोदय उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। Question number 245, Dr. Sasmit Patel. Question number 245, sir. Honorable Minister. Question 246, Shri Josh K. Mani. Of the House. Question 247, Shri Shanmugam. Honorable Minister. माननीय सभापति जी उत्तर सभा पर रख दिया गया। Number 248, Shrimati Darshana Singh. Honorable Minister. Honorable Minister. Take your seat.
धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। क्वेश्चन नंबर 249 श्री नारायण दास गुप्ता, ऑनरेबल मिनिस्टर of the House, sir. क्वेश्चन नंबर 250 श्री एस सेल्वगणपति, ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 251 मिस डोला सेन, ऑनरेबल मिनिस्टर। पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 252 श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 253 डॉक्टर अमर पटनायक, ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 254 श्री अबीर रंजन विश्वास, ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया। क्वेश्चन 255 श्री जवाहर सरकार गोटी और सीट एंड रेज द क्वेश्चन, ऑनरेबल मिनिस्टर। The House. I want my chair. Please, take your. Dola Sen, take your seat. Please, take your seat. Take your seat. Susmita, take your seat. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Susmita, take your seat. Honorable members, one second, listen to me and take your seats. I'm addressing the issue. Take your seat. माननीय सदस्यगण, आज अपने लिए बहुत सोचने और चिंतन का मौका है। और मुझे आज प्रातः है अटल जी की एक कविता का ध्यान आया, क्या खोया क्या पाया। 20 तारीख को यदि अगर आप चेयर की बात मानते तो जो लोकसभा में हुआ है और लोकसभा में जो व्यापक स्तर के ऊपर मणिपुर पर चर्चा हुई है, गृह मंत्री ने चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने की है, आप पर हम मौका चूक गए। तो The House is adjourned to meet at 2 p.m. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today.
कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा, और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये करने से पहले इसमें कोई न्याय के बारे में कोई गोता ही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के सारे विद्वानों को, इस विषय के विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा कर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें, मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं मान्यवर। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इस देश को मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे मान्यवर। एक कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय, ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। एक कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं। एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं। एक क्षेत्र हो जाएगा तो क्षेत्र। अंततोगत्वा 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करके लिखेंगे। इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वाहन का भी हमने एडवांस में
अनुभव कर लिया है मान्यवर। आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर की किसी भी गुना होता है, सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा कोई भी गुना होता है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है मान्यवर। हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाएगी। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीरो एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान, गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है, इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है, परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब हो। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केस होकर सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाए। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहे। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर, सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी।
और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फ्रीज करना जाएगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एसपी के नाते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है। हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं। माननीय, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव। इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती। आज हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए, डीजीपी साहब को समय नहीं होगा, तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट है तो 1.5 साल तक गवाही नहीं होती। मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं, वहां जो एसपी है वो फाइल देखकर, और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने भी फाइल देखकर ही कोर्ट को असिस्ट करना है, मगर ये नहीं होता था। अब हमने ये कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी ये है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर। एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी। और किसी को थोड़ा लगा, रिपेयर होकर 1 सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया, तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया। हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदला। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। मान्यवर, राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली रिपील, कंप्लीटली
यहाँ लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सबको कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुछ करने का अधिकार भी। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। दुनिया में वो कहीं पर भी सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो, इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक मिनट, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को
गृह विभाग के कार्य संबंधी माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधी, गृह विभाग के कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर, पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर सिर्फ एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो लोग जेल की सजा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो जमीन में होता है, सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी सवाल है, माफी अपराध क्या है, इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी मेहताब नहीं जी। होती है, जन्म टिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। बी मेहताब जी प्लीज, एक मिनट। बी मेहताब जी, बी मेहताब जी। Sir, I am very grateful to be a witness in the history in the making. कई सालों से as a journalist by profession, we have been repeatedly asking for change in IPC and also CRPC. And during my last 25 years in this house, during Atalji's prime ministership, we had also deliberated on change of Evidence Act. Why it is necessary. To certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani, had assured this house that yes, we will be working on the change of Evidence Act. So today when I saw, because this is in a supplementary list of business, and Honorable Home Minister has brought about 3 bills together, totally overhauling our legal system, just law and justice system. Actually, I would only like to mention here, of course, in the statement of objects and reasons it is mentioned relating to IPC. What was IPC? It is not actually Indian Penal Code. It was originally an Irish Penal Code. And Macaulay is the father of this IPC. Though in 1834 this committee was formed, the law committee was formed by the British government, and 1834 means it was during the East India Company. 1856 the British Crown came into power in India, and in 1860 this was implemented, just removing Irish and putting Indian Penal Code. So it was more like subjugation of the subjects by the power, by the ruling power. So now, as the Home Minister has very rightly mentioned, he has enunciated certain points and it is going to the standing committee. Similar is about the Criminal Procedure Code. And for 7 decades, I would say, what has been added to and the manner in which our government and the society has been feeling for last quite some time, that contemporary needs should also be looked into, and that has been there. And in the Evidence Act, sir, Evidence Act of 1972, comprehensive review of our criminal law was necessary, which has been done in this draft bill. And I believe the Home Standing Committee of Home will go into all those details. And as the Home Minister has very rightly mentioned, it is people-centric, not government-centric or administration-centric. So in that respect, I believe it is a good beginning, and I'm really grateful that I am, including my party members and perhaps all of us, are witness to the history in making, because after so many years, our wishes are being fulfilled. Thank you, sir. माननीय सदस्यों, नहीं डिबेट नहीं हो रही इस पे। माननीय सदस्यों,
आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की हुए मामले अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। मान्य सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो केंद्रीय माल और सेवा संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर एक साथ विचार किया जाए। सभा की सहमति हो तो इन विधेयकों को बिना बहस की सभा के निर्णय के लिए रखा दिया जाए। माननीय मंत्री जी, Sir, I rise to move that the bill to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. And also together with it, as you have mentioned, Honorable Speaker, I rise to move that the bill to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I move, oh, there's an amendment. Okay, it will be passed? All right. I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हो और विधेयक पारित हुआ। दोनों बिल करके दूसरा बिल करना है। हाँ, दूसरा। Sir, I move that the bill be passed. No. Sorry. That the